जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी नमस्ते। गुरु जी सारी सात संगत का मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादास टीम पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच विमी दीवानंद जी हाजिर हैं एंड आई एम ग्लैड कि दीवान अंकल भी मैं देख पा रही हूँ उनको कि वो भी आए हैं, तो बहुत खुशी हुई उनको देख के। आंटी जी आज हम आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब आप सत्संग शेयरिंग करें तो एक दो बातों का ध्यान रखें प्लीज। फर्स्ट 30 मिनट्स आप अपने सत्संग शेयरिंग करें, जिसमें कि आप अपनी जर्नी और एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ। नेक्स्ट 15 मिनट्स आंटी जी आप संगत को बताएं, ग्लोबल संगत को बताएं कि गुरु महाराज ने आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म की। जब वो चोले में थे उस वक्त सत्संग कैसे ऑर्गेनाइज होते थे, कैसे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उसका क्या महत्व था, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, सत्संग शेयरिंग, ये सारी चीजें कैसे होती थी। क्योंकि हम लोग बहुत नई संगत है विमी जी, तो हम ये सब जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि उस वक्त कैसे होता था, ताकि हम उस चीज को फॉलो कर सकें। तो आइए संगत जी, हम विमी आंटी का, दीवान अंकल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओके पापा। संगत जी, गुरु जी के बारे बयान करना बड़ा मुश्किल है। मैं आई कैन से ओनली वन वर्ड, ही वाज ऑल इन वन। वो रब्बां दे रब सी, महाशिव सी, इंसान के रूप में आए, लखा लोगों का कल्याण किए और 2007 महासमाधि ले ली। गुरु जी अपनी संगत ਨੂੰ बहुत प्यार करते थे। वो कहते सी मेरा परिवार है। और ਜਿਹੜਾ गुरु जी कहते सी कि मैं ਜਿਹੜੀ पुरानी संगत, गुरु जी ने कहा कि मैं, हेलो कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी प्लीज। आ रही है आवाज पापा, बोलो। यस अंकल, वी कैन हियर यू। गुरु जी कहते सी, गुरु जी अपनी संगत ਨੂੰ बहुत प्यार करते सी। वो कहते सी मेरा परिवार है। मैं इस गुरु परिवार की फाउंडेशन रखी है और इनू छोटी ਜਿਹੜੀ पुरानी संगत है वो नवी संगत ਨੂੰ अपने नाल जोड़ेगी और ਵਧਾਏਗੀ। और रोज ਤੁਸੀਂ देखो गुरु जी का परिवार इन्ना ਵੱਡਾ हो गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 96 ਵਿੱਚ गुरु जी ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ मिले अबाउट 100 के करीब ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ गुरु जी का परिवार है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है हर जगह एवरी कंट्री गुरु जी ਦਾ जो चल रही है और सत्संग हो रहे। सो गुरु जी के बारे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ कि उन्होंने कदे कोई वो नहीं किया। गुरु जी कहते सी कि जदों सब तो पहले उन्होंने प्रवचन ही करते सी, कदे उन्होंने भाषण नहीं दिता। वो आंदे सी, अपना वेलकम बैंड बजदा सी, अपने आप बैठ जाते सी, आके सानू कड़ा प्रसाद देते सी, असी खांदे सी और बड़ा एक खाते होंदा सी, साढ़े दो हथ भर जाते सी और वो इंजॉय करते सी। सो और वो कदे प्रवचन नहीं किया, कदे उन्होंने भाषण नहीं किया। वो बहुत घट बोलते सी, कदे कदे बोलते सी। अगर किसी नाल गल करनी होंदी सी तो उन्होंने अपने को बुला के इशारा करके बुला लेंदे सी और गल करते सी। सो गुरु जी ने जेड़ा कुछ लफज कहन, थोड़े लफज जेड़े उन्होंने कहन, मैं आई कैन टेल इन शॉर्ट वर्ड कि वो बहुत जरूरी है। अगर असी उन्होंने असी अडॉप्ट कर लिए अपनी लाइफ तो साडी लाइफ बड़ी ईजी और सुखद हो जाएगी। उन्होंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं सी। उन्होंने देखो सब तो पहले क्या गुरु जी ने, जो मेरे को आंदे हो, सब तो पहले माँ प्यो की सेवा बहुत जरूरी है। उन्होंने दी ਜਿਹੜੀਆਂ ब्लैसिंग्स हैं वो गुरु के समान है, रब के समान है। फिर कहते सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ जोड़े उतारते हो उत्थे गुरु को दरबार च अपना दिमाग भी रख आओ, नहीं तो तुसी गुरु को लाओगे
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕ ਆਏ ਔਰ ਬਲੈਂਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੈਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ। ਔਰ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਚਟਾਈ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਮਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਕਰਾਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਣਾ, ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਯੂ ਐਂਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਅੱਜ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡਬਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ 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 ਜੋਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਇਟ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਓਪਨ ਟੂ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਟਰ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਚਲਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਆਂਟੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 13 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਕੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ।
ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। मैं जब माथा टेका तो मैनू कहते ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए। और सच पूछो गुरु जी ने अपना दीवाना बना लिया और इन्हीं प्रेम की डगर दी। घर घर हर जगह संगत बड़ा प्यार कर दी। एक गुरु जी ने बहुत कहते ना कि जब तुसी गुरु जी कैसे अपनी संगत आपस में प्यार करो, आपस में रिस्पैक्ट करो। सो उस तो बाद ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਿਸ ਹਿਜ਼ ਫੀਟ ਐਂਡ ਸਿਟ ਇਨ ਅ ਕਾਰਨਰ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਅਨਲੈਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਬਈ अंकल वो वाला सत्संग सुना, या कदे कदे कहते सी हाँ भी मेरे चरणों तो बाद। ये मेरा रूटीन सी, गुरु जी के चरणों रूटीन असी दोनों पहुँच जाते सी। जब तक गुरु जी 2 साल रहे 68 तक चंडीगढ़ ते असी साडा रूटीन सी, असी तैयार होकर दोनों अपना मियां बीवी चले जाते सी। बेटियां मेरियां बॉम्बे रहंदियां सी, बेटा मेरा बिजनेस से बिजी होंदा सी, असी पहुँच जाते सी। ये साडा रूटीन सी। उस तो बाद ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1967 ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ बड़े धूमधाम मनाते सी। तो वो बैठे सी, गुरु जी मैं बैठा सी, बैठे बैठे नैचुरली बंदा इमोशनल हो जाता है। मेरी अखां च आंसू आ रहे सी ते गुरु जी ने मैं देखा, बुलाया, कहते की गल है गुरु नाल बहुत प्यार। मैं कहा गुरु जी माफ करना, लव एट फर्स्ट साइट है। अच्छा, सेवादार नूं कहते स्वरूप लैके आ मेरा और पेन लैके आ, स्कैच पेन। तो वो काला पेन लैके कहना नहीं गोल्डन पेन लैके आ। गोल्डन पेन लैके आया, वो अपने स्वरूप से लिखा दीवान फैमिली फुल ब्लैसिंग ऑलवेज फॉर होल लाइफ गुरु जी 14/4/97 लै जाके ऐश। वो स्वरूप मेरी बैग ते पिया, गुरु जी दे अपने हथ राइट है, उन्होंने मतलब हथ नाल ब्लैसिंग। एक तो होंदा जबानी ब्लैसिंग होंदी, जिहड़ा गुरु लिख के तुहानू ब्लैसिंग दे देंदा है वो फॉर एवर होंदी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। सो मैंने कहते ऐश कर। फिर कहते विमी बंबे है, मैं कहा जी। एक स्वरूप होर मंगाया, लिखा विमी ब्लैसिंग ऑलवेज जय गुरु जी, ये ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। सो गुरु जी ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਦੀ, लेकिन वी वर मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियली भी नहीं सी, इको बेटा सी, लेकिन मैं चाहता सी कि बड़े धूमधाम नाल ब्याह होना चाहिए। एनी आओ जब हुक्म हो गए तो असी तैयारी शुरू कर दी। मैं उत्थे लिस्ट बनाई, मेरी फर्स्ट फैमिली सी 35 बंदियां दी, वो जेड़े 13 बंदी करके बारात ले जावांगे। और साडा मेरा और मेरी वाइफ का सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, रिलेशन वो 400 की लिस्ट थी। वो मैं आर्मी कल बुक कराई, उत्थे गया तो कहने लगे ये तो ऑलरेडी बुक है। 35 बंदे वास्ते मैं जरा किसान भवन हाल बुक कराया। एनी हाउ उस तो बाद असी उत्थे पिंक रोज टेलर है, वो गुरु जी के चोले बनाता है। मैं क्या गुरु जी ने चोला बनाना बना दोगे? कहना हाँ, डिजाइन दसो। मैं कि मेरी छोटी बेटी बम्बे डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर, वो जे बलाए नाल काम करती, वो डिजाइन देगी। उन्हें डिजाइन दिता, कहने इन्ना कपड़ा लैके आओ। असी गए जाके, क्योंकि जदों भी असी करते हैं सब तो पहले अपने रब वास्ते कुछ ना कुछ लैंदे। असी वो शॉपिंग ते गए, उत्थे गुलाटी स्टोर है, पहले गुरु ग्रंथ साहब का रुमाला लिया, फिर गुरु जी के चोले का कपड़ा लिया, फिर शॉपिंग फर्दर मैं वाइफ ने कहा रुक जा तू गुरु उत्थे कलब मेरू अपने रब दे फेट है, क्योंकि अगर तुहानू विश्वास है, भरोसा है तो गुरु तुहाडी सुनदा है, तुहाडा काम करदा है। मैं क्या फोन करो थे
क्लब फोन किया, कहना जी ऑलरेडी बुकिंग सी वो कैंसल हो गई, आ जाओ तुम। असी गए, जाके पैसे जमा कराए, फार्म भरिया और सारा वो कल्याण भी हो गया। सो गुरु जी ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। बड़ा मूड खराब होया, लेकिन एनी हाउ मैं गुरु जी ने अपना गद्दी ते कार्ड रखा, चोला रखा और मिठाई का डब्बा। मैं क्या गुरु जी तुसी क्या सी छेती करो, मैं छेती कर रहा, लेकिन मेरे वास्ते रोग नहीं है, क्योंकि मैं तैयार नहीं सी, इको बेटा सी। लेकिन मेरी हुण यही रिक्वेस्ट है कि मेरा इको बेटा है, इसकी शादी जी धूमधाम नाल होनी चाहिए। ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਨਾਈ ਵਾਦਨ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਦੀ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 35 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਸਨੈਕਸ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਿਹਰਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾਈ ਵਾਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हैरान हो कि उत्थे लाइव शनाई वादन हो रहा, बिस्मिल्लाह खान दा, और इन्ने अच्छे स्नैक्स, इन्ना अच्छा टी काफी, इन्नी डेकोरेशन, और गुरु जी ने मेरा काम फ्री अच्छी करा दिता। उस तो बाद 2 दिन बाद अपना सी मैरिज रिसेप्शन सी, तो उत्थे देखो इन्ना वधिया अरेंजमेंट होया सी। मैं हैरान हो गए अरेंजमेंट किस तरह। ਉੱਥੇ ਕਲਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਟੇਕਸ ਓਵਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਟੁੱਕ ਓਵਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, then he takes over. You need not worry at all. He takes over your mental, financial worry. ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ, 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ, ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਅੰਕਲ, ਕਿ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੇਕਸ ਓਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੰਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਂਡ ਟੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ 2014 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆਵਾਦ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। I hope. Hello. Auntie, you are audible. Okay, thank you. Jai Guru Ji, Sangat Ji. First and foremost, let me apologize for the little technical hitch. So like Papa shared, our journey with Guruji, what we know of, started in 96 in Sector 33, Chandigarh. It was just a friend of mine, she just happened to ask me, that my Bhaiya Bhabhi had taken me to Guruji, so do you want to go? Honestly, I was looking for a guiding light in my life, which was a fact since childhood, because I would always look at the stars in the sky, and I would always say, I want a guiding light in my life. I don't know what I was asking for, since I was, I think, in school that time. But it was always there, perpetually in my, head, heart. So when this friend of mine took me there, we were in Sector 21, Guruji was in 33, which was literally 5 minutes away from our place. So I reached there, and Guruji was in his gaddi. The moment I was at the door, and I could hear very loudly in my ears, "This is your guiding light. This is your guiding light." So I didn't know honestly what that was, because the question was not in my head then, and but I know it was very overwhelming just looking at him. I saw this person who was in human body, but didn't look like a human being. His aura, it was magnanimous. You could feel that, I was totally blank in my head, totally, which happened each time we went to Guruji in Sector 33, or even in Delhi for the matter. So Guruji being very, very, very simple, it was up to you. You want to touch his feet, take his blessings, it's okay. You don't want to, just want to sit, it's okay. I'll just go back a bit, because while I was growing up, my father would tell my brother sometimes, he says, Tuesday ko non-veg nahi khana, is din ye nahi karna. Few things, very few things. So I would always tell Papa, Rab ne ye nahi banaya, Rab ne, because I always felt Rab has not made anything. We human beings have made a few taboos for whatever reasons, due respect to everything. But my connect was direct, because I always thought simplicity is where, I don't know, this is how I was or am, whatever. So when I went to, you want to cover your head, you cover your head. You don't want to cover, it's okay. So Guruji being very, very simple. So I just touched his feet. And the moment I touched his feet, he says, very sweetly, he looked at me, he said, Kalyan kita, apne maa baap ko leke bade change hai. And honestly, Sangat ji, my head was like this, dimag bahar chodo, maine to nahi choda tha, main soch rahi thi, main kaha, how does he know? Because I've come for the first time, which was a fact. And because the thought was there, Guruji knew what I was thinking. He just looked at me again, because of course my thought was that, how does he know? He says, main keh raha na, wo dono badi changi aatma the leke aa. It was a hukum. It was like, so I said, Ji Guruji, like, those days we didn't say Jai Guruji or anything. It was always Guruji always did namaste to everyone. I still remember he would actually, each time fold his hands, do namaste to everyone. So I said, Ji Guruji, and he told me to sit next to him. He said, Athe beja. And I sat, at his feet, and only tears were rolling down.
tears were just rolling down. I don't know what it was, but it was beautiful and blissful. You know, whatever time we went, I know that we had a very, we are the people who would sleep early, wake up early kinds. But ever since we met Guruji, things changed drastically. It happened very beautifully. I wouldn't say very organically. So anyway, so I'll come back to that later. So so I sat there 3-4 hours. Tears were just rolling down. I felt very nice. Didn't feel like I'm going home. But eventually, when did go home by maybe midnight, past midnight. Morning, I told my parents, I met this Guruji and he was calling you. It was a hukum. So he says, so my mom, when I told her, she being Arya Savaji, as Papa shared, Mama said, हाँ बेटा जरूर चलेंगे. For me, it was a miracle. Mama saying yes to Guruji. And then my Papa, of course, he was very simple, very contented person. So he was open to going to Guruji, obviously. So he said, "Zarur chalenge." So we went to Guruji that next evening, and Mama bowed down. In a sense, she just bowed down a bit, but she couldn't really touch his feet at that point of time. She said, "Guruji, मैनू माफ करना, मैं हेठा नहीं बैठ सकती. मैनू slip disc है, मैनू operation किया है," which Papa already shared. So Guruji ने बहुत sweetly देख के कहते, "Stylish auntie, तेरा कल्याण किता, बैजा हुन." And my mother sat on the floor after maybe 13 years of not sitting on a low seat or low sofa, or of course not on the floor for sure. And that is his meher. That's his meher. First day, he just blessed my ma and she was fine. She was on her own. She sat, I think, on the floor for maybe 3-4 hours and got up on her own. So that's Guruji. We didn't know much about him. We didn't know anything about him, actually. So we had not even heard today, like a lot of people, of course, the media and all, and of course through Sangat, we've heard a lot of satsang. So we kind of have an idea about the whole thing. That time there was nothing like that. And Guruji was never fond of media ever. Not in those days, of course, 90s I'm talking about. So, and Papa, like he shared, he would touch his feet. Papa ne unke charan chume aur he would sit in a corner. So Guruji ne dekh ke kaha, ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए. Papa is a very simple and contented man. So Papa would, each time he would go, he would just kiss his feet and sit in a corner. So Mama had a lot of questions. She would keep talking to Guruji like, it's amazing. It's his meher that, we're seeing Mama's certain videos today after maybe how many decades. They're just coming out of nowhere, and we can see like either Mama is doing Guruji's seva or talking to Guruji. But I remember when we used to be there in 33, Guruji ke kaan mein Mama kuch na kuch कहती रहती थी. And there was a time when Guruji said, "Stylish auntie, and सवाल ना पूछिया कर, तू नास्तिक हो जाएगी." Then he would laugh. So एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे तो फिर एक दिन मम्मी गुरुजी की सेवा कर रहे थे तो चरण चंडीगढ़ में गुरुजी we didn't see Guruji with socks and all on, although in Delhi we saw that more often. So ये चंडीगढ़ की बात है तो गुरुजी की सेवा मम्मा कर रही थी. And जब चरणों की सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने कहा, बस कर स्टाइलिश आंटी, तू मेरी सारी शक्ति छीन लेगी. So certain things we just remember how he would say that, because that time Guruji ने कभी ऐसे कुछ boundaries ही बनाई थी. We would still sit very close to him, like literally next to him, on the side, behind him, all that stuff. Unfortunately, we don't see that much because we make, Guruji बहुत simple रखते थे सब कुछ, and that's what he loved. Which is what I always share is, even today when I share my satsangs, come to the simplicity, because that's Rab. That's pure Rab. Because he doesn't want, Guruji wanted everyone to, he said, घर घर जोत चलेगी, पूरी दुनिया में मेरे सत्संग होंगे. Honestly, we did believe him. We didn't know how, but we believed him. Every word of what he said, it was very natural. वो कहते हैं ना, विश्वास और यकीन था कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं. Instantly, it was not that, it got built over of course it got, definitely you get evolved and you learn more, and there comes a time when Guruji ki to jo vachan bolte hain wo hona hi hona hai. It's just a time he knows, we don't know. So it was very nice. Guruji would, he would talk much, very rarely he would talk, and very few words. He would call a person like, ऐसे हाथ करते थे आगे और बोलना या पूछना जो भी होता था. So, and those days it was only chai prasad. There was no like what we have. We have a lot of snacks and this and that. And Guruji was always share. He would say, "Langar apne hath naal banao."
So that's how if it's simple, we can do lots on our own. But if it's like, things change over the period of time, सबका अपना अपना भाव होता है. But उस टाइम में सिर्फ चाय होती थी, one huge tray, maybe 20, 30, 40 glasses on a tray, and it wasn't one time. It could be 2, 3, 4, 5, 6 times. We would have in Sector 33 is what I'm talking about. And then, there were times when, some Sangat was sitting like pretty far, and Sangat would say, हम चाय नहीं पीते हैं. And Guruji sitting so far away, he said, "आज चाय नहीं है, प्रसाद है, पी लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा." That one words, one line he would just say wherever he's sitting. And then, of course, 4 of us would sit, together. Like it was जैसे line में बैठते थे, 4 हम लंगर खाते थे. And it could be any and everybody. It didn't matter. Because Guruji, his whole thing was, सब एक है. रब वास्ते सब एक है, which is a fact. We all are aware of it, but we don't live that. Not all of us live like that, right? So, गुरुजी कभी-कभी किसी को बोलते आजा मेरे हाथ दबा दे आजा, तो मैं गुरुजी को I would always, मैं बहुत निहारती थी गुरुजी को, बहुत ज्यादा. Sorry. So एक दिन मैं ऐसे उनको निहार रही थी, और क्योंकि तुम्हारी आंखें, I don't know, मेरी आंखें ज्यादा बंद नहीं होती थी, मेरी खुली ज्यादा रहती थी उस टाइम में. And I was looking at Guruji, and suddenly I saw a shivling which just came on his forehead. And I kept looking, and Guruji was sitting like this, how he always would sit, like, chin pe haath rakh ke. And so chin pe haath rakh ke baithe hote the, to maine unko dekha shivling aaya. Or a minute later, he put his hand on the forehead. And I told Guruji in my heart, I said, Guruji, अच्छे से देखने तो दो ना, please. He smiled. Of course, he मैंने मन में कहा, it was all telepathically, and he put his hand on the chin again, and like it was like the gesture was like, देख ले जितना देखना है का. That's how. So you would just bow down. Things would just happen to you. So one day we were sitting, and Guruji called Sangat, अच्छा मेरे हाथ दबा दे. So I said, Guruji, very biased in my heart again. So you're very biased. I feel like doing your seva. Sangat ji, my thought gets over, and Guruji says, आजा, मैंने पता तो मेरे हाथ दबाने आजा. So I pressed his hands barely for maybe 5 minutes. And मेरे हाथ से next, I don't know, 2, 3, 4 days तक खुशबू ही नहीं गई. वो fragrance गुरुजी की constant आती रही. That's अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था in fact, और मन करता था, बड़ी खिंच थी. My parents, they had very social life. They had very formal dinners almost every second day. But ever since we met Guruji, all that was literally had gone for a sixer, because it was 7 days a week. It was not like, how we have like 5 days a week or whatever in different places. It was all 7 days. Sham ko hum pahunchte, Guruji 7 baje apne kamre se aate the. 6:30 we would be there, like half hour before. And we would, what I remember of, we would be standing for those 30 minutes. I don't remember sitting and waiting and all. We would be standing, most of us. And there were like 30, 40 of us, not very many. And फिर गुरुजी 7 बजे जब गुरुजी बाहर निकल रहा था कमरे से, उनसे पहले उनकी, कहते हैं ना, वो एनर्जी, ऑरा, वो बाहर आ जाती थी. You would know, you have a smile on your face क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं. Like it could be like 6:55 or 7:05, it didn't matter, but you could feel it, him coming out. And then he would come, sit on his gaddi, and immediately कड़ा प्रसाद, देग प्रसाद आ जाता था, परात में. And Guruji we would stand in a queue, and हम अपना जाके अपना लेते थे. And I have very big hands, I don't know whether you can see it. So Guruji अपने एक हाथ से देते थे, मेरे 2 हाथ में पूरा नहीं आता था. मतलब literally हम बाहर जाते थे, मुंह से खाते थे directly, and then finish it, wash our hands outside the gate. And I still remember there was a bucket and a mug. हम हाथ धोते थे, सेवादार एक होते थे वहाँ, हाथ धोते थे. We would come and sit. Barely हम 15-20 मिनट बैठते थे, and गुरुजी से चलो हो जाओ शुरू. हम फिर लाइन में आते थे. Now again, maybe laddu prasad has come, but we would have handful of laddu prasad, handful of barfi prasad. So some people say नहीं हम नहीं खाते मिठाई and all. Then he would say, जा मिठाई नहीं हैगी, आ दवाई हैगी. ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ हो रहा है अंदर, ਤੁਸੀਂ खाओ. वो हमें खिलाते थे, और हम इतना खा के उसके बाद हम लंगर प्रसाद की वेट करते थे कि अब लंगर भी खाएंगे. Today we always say, अरे मीठा नहीं खाना, कम खाना है, half लंगर, etc. Everybody each his own. But और लंगर बहुत simple होता था, बहुत simple, like literally दाल, रोटी, chutney, and maybe one vegetable. A lot of times I remember eating aloo vadi and all this stuff. No exotic. I don't remember having paneer ever, but today we see a lot of it. So I would say we need to get back to the simplicity. What Guruji, so Guruji ko manenge aur Guruji ki bhi manni chahiye hum sabko. That's what I believe, which is what whenever he makes us do the satsang,
we prayed to him कि अच्छे से गुरुजी करा दो और लंगर बनवा दो, क्योंकि you know, it's not that I am very good at making for 50, 100, 150, I can't, but we take them help, and उनकी मेहर से, you know, whatever little we can do, we do that. But मेहर उनकी, it's not that, and गुरुजी कहते हैं मेरे हुक्म के बिना तुम यहाँ नहीं आ सकते, which is a fact. आप हुक्म के बिना वो जोड़ नहीं सकते, हुक्म के बिना आप उनके बारे में सपना भी नहीं देख सकते, which is he said, these are the words he had said when he was in physical form. ਤੁਸੀਂ मेरे हुक्म के बिना मेरा सपना भी नहीं देख सकते हो, which is because वो सपना नहीं, वो दर्शन है उनके, so उनकी मर्जी होगी जब वो दर्शन देना चाहेंगे. You know, गुरुजी अराउंड 10-11 बजे लंगर प्रसाद के बाद छुट्टी कर देते थे मोस्ट ऑफ द संगत, एंड कुछ संगत रहती थी. सो वन ऑफ द टाइम्स आई सेड गुरुजी मेरा भी तो मन करता है यहाँ बैठने का, तो अरदास मन में हुई और उन्होंने सुन लिया, एंड संगत को जिनको छोड़ना था उन्होंने छुट्टी दे दी, ऐसे हाथ करते चलो छुट्टी दे दी, और हम कुछ लोग रह गए, maybe 50-20 of us. So Guruji around 12:30 or so went to his room and came out after a while. Then it was a carpet. He would just lay down on the carpet and we would just surround him, all of us, like how a family sitting with a grandfather or elderly at home. And literally हम अपनी दिल की बातें करते थे, घर की हालचाल, and very casual. We didn't know हम रब के साथ बैठे. Not initially, we didn't know. And then he would just look at his wrist. I don't remember he had a watch at that time on his on his forearm, and he says 2:30 बजे ने चलो लेक पे चलिए सैर करें. For me, that's my favorite place in Chandigarh to go for a walk. So we said very happy. He said चलो बिस्किट ते कंटेनर ले लो ज़्यादा, असी पिकनिक मनावांगे. रात को 2:30 बजे हम सब लेक जाते हैं, whatever 4-5 cars. We all go to the lake now. संगत जी, I walk very fast. मैं बहुत तेज चलती हूँ. For me, walking slow is an effort. मैं बहुत स्पीड से चलती हूँ. तो हम पहुँचे लेक पे. I had heard through Sangat a few satsang, because we would not really do sharing, but little bit whatever sharing. We didn't know anybody's name, etc. Nothing. So हम वहाँ लेक पे पहुँचे. गुरुजी बीच में थे. लेफ्ट में मेरी फ्रेंड थी रोजी और राइट में मैं थी. और गुरुजी ने हमें जैसे कमर से फ्रेंड्स को पकड़ते और हमने गुरुजी को पकड़ा हुआ था. And believe me, Sangat ji, we were running. Both of us walk. My friend and I walk very fast. We do brisk walk every day. But unke saath we couldn't cope up. And I think he was definitely not walking. He was flying. I'd heard through Sangat was jameen pe nahi chalte, but that day I think actually my dimag chal raha tha, and I saw that he was flying. And in the meanwhile, it starts raining. We can see the rain. It's all rain all around, and not a drop of rain on 3 of us. And I remember that very clearly. I looked at my friend. I said, Rosie, बारिश हमारे ऊपर नहीं है. Like more in gestures than in words, because Guruji was next to me. And then I looked at Guruji like, who are you? Only God can do what we were experiencing that time. And he had a very beautiful smile. Like, बुद्धो तुम्हें पता ही नहीं तुम रब के साथ हो. That expression I still remember. So we did the full walk. It's around 2.5 kilometers one way. So finish the walk, and Guruji जब भी लेक जाते थे तो मोर आते थे और डांस करते थे, whatever time we would go. So we finished the walk, came back, he sat on the parapet. वो ऐसे cross leg बैठे, और मैं तो अभी दिमाग चला रही थी. मैंने कहा इनके shoes, he called me, से आजा मेरे जूते सूंघ. संगत जी, I smelled his shoes. उसमें से इतनी fragrance constantly, और मेरा सर झुक गया था. Like I just bowed down कि ये कौन है? And he called my mother. He says, stylish auntie, मेरी तुन्नी सूंघ, smell my navel, नाभि. And मुझे तो honestly नहीं बोला था, but even I smelled his navel. It was like, hose pipe में अपनी इतनी सारी perfume bottles डाल दी, that constant fragrance from his navel. And then I don't know how, but I went and touched his stomach. It was like, baby stomach. Infant का जैसे होता है, just soft, tender, pink. That was him. Literally, sir, हम सबके सर झुक जाते थे. बहुत discipline था, बहुत ज़्यादा. Like, I don't remember anybody even whispering or talking. Phones तो fortunately ज़्यादा होते ही नहीं थे. जिनके पास से वो तो कभी अंदर आते ही नहीं थे. It was never 2 hours. गुरुजी के साथ हम बैठते थे 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे. We don't know. हम शाम को पहुँचते थे. It could be 12 in the night, 1 in the morning, 2, 3, 4. पता नहीं, कुछ फिक्स नहीं होता था. जब तक गुरुजी की मेहर मौज होती थी, हम वहाँ बैठे रहते थे. और अरदास यही रहती थी, गुरुजी जाने मत देना. Whatever it was, all of us had to, be working people. Mom, dad had to wake up in the morning, but for the work. But
मन होता था कि गुरुजी यहाँ से मत भेजो, बस एक ही अरदास। तो जब उनकी मौज होती थी बिठा लेते थे, नहीं तो फिर घर भेज देते। Then of course when he shifted to Delhi, we would go to Empire State pretty often as and when we could, because I was based in Bombay, mummy, papa and the family were in Chandigarh. So, and whenever they would come from Chandigarh to Bombay, they would meet Guruji, take Agya and then go, because without Agya हम कुछ नहीं करते थे उनके, like literally everything was, it still is. It's not that he's not there. He's definitely omnipresent. We know that. We feel him. And the very fact we see the Sangat, what he said, we're seeing it unfolding. He said in 90s, he said, कनक ते चावल विच कीड़ा पै जाएगा, ये कहा था उन्होंने तब। हमें समझ नहीं आया, ऐसा नहीं, माना नहीं, हमें समझ नहीं आया। बट टुडे, इवन टुडे, लाइक गुरु जी की मेहर से उन्होंने भी ऑफ लेट फेब एंड से बहुत सत्संग कराए बॉम्बे में। एक संगत है उनके घर में, बहुत सत्संग कराए। लिटरली इट वाज लाइक ऑड टाइम्स पे, कभी 12 बजे दोपहर को, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 5 बजे शाम को, कभी। सो वो बहुत इराटिकली फॉर कपल ऑफ मंथ्स इट वाज एवरी, द संगत इज द राइटर अंजना, एंड गुरुजी वुड suddenly tell her, गड्डी मोड़ ते जाके सत्संग कर। शी वाज गोइंग फॉर वर्क, गोइंग टू हर ऑफिस, गोइंग फॉर हर मीटिंग्स, गड्डी मोड़ ते कर जा सत्संग। तो गुरुजी संगत कहते कोई ना कल्ले बैठ जा। सो ये कॉन्स्टेंटली बहुत हुआ, ऑफ लेट बहुत हुआ, और गुरुजी ने बहुत कुछ बोला, दिखाया, गाइड किया बहुत संगतों को, नॉट ओनली जस्ट आस, बट उस टाइम में बहुत पोटेंट। एंड देन वन डे ही सेज, it was like I think almost 2 months सत्संग चल रहे थे। तो संगत अंजना से, गुरुजी चलो हुन मैं काम ते भी थोड़ा ध्यान देवा, सो अब ग्रैंड फिनाले। सो शी हैड अ गुड huge satsang, got a lot of sangat, and after the satsang, during or maybe towards the end of the satsang, गुरुजी से तू डिसाइड करेगी या हुन अमृत वेला शुरू करो कल तो। So then गुरुजी made us to Amrit Vela for I don't know how many months it lasted, maybe. And during the Amrit Vela, Guruji was guiding, and he said, only सत संगत नाल करना है तुसी। And then one day he says, इन्नू बदाना हैगा। जोत दिखाई मेरी सिस्टर को, 2 बहुत बड़ी जोत दिखाई, और कहते हैं इन्नू बदाना हैगा, लाइक इसको बढ़ाना है हमने। तो हमें समझ तो ऑनेस्टली हमें नहीं आती, हम पूछते रहते हैं गुरुजी से। तो साथ साथ संगत के साथ सत्संग शुरू करो। एंड वन डे ही टोल्ड अंजना, ही सेज एमवे वाकन करना है। एमवे वाज अ MLM scheme, multi-level marketing scheme, which we had forgotten. We of course knew about it, but we'd forgotten. And Guruji reminded, he said, "Amve vakan badana hai, like multiply it." Like, so we called 7 sangat. They would come and then they would go out and they would do the satsang 7 करते आज बॉम्बे में बहुत सत्संग, I'm sure all over हो रहे हैं। We are not aware of it, or some we are aware of. So constantly सत्संग जो गुरुजी ने कहा था बढ़ाने हैं, कहते बहुत मारा टाइम आ रहे हैं। तो जब सत्संग चल रहे थे, हमें संगत से मैसेज भी मिला कि वॉर को टालने के लिए कोई नहीं कह रहा। तो दोस अरदास शुरू हो गई उस टाइम पे। सो गुरुजी कहते तुसी, तब कहते थे 90s में, हमें समझ नहीं आया, कहते तुसी मेरी फोटो नाल गल्ला करोगे, ये कहते थे। लाइक आई सेड, वन लाइनर्स, हमें सब कुछ समझ नहीं आता था, या वो समझ जान के ऐसे हमें समझ नहीं, प्लान कर देते थे टोटली। लाइक ओनली अरदास इज गुरुजी, आज भी अगर आप सामने आते हो तो हमें पता चल जाना चाहिए कि आप वो तो आके चले जाएंगे, हमें मालूम ही नहीं चलेगा। So it was very simple those days, and I think that's what we have to make it very simple even today, because a lot of lavish satsang, as we all aware, various places, half sabka apna. But I would say, because I remember this is a few years ago, somebody asking, very simple lady, she says, हमें करना है घर में, पर कितना खर्चा होगा? That's the first thing. So I don't think we have to show it कि जितना सिंपल करेंगे संगतें और ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज everybody can't really, they have their own means, whatever. कराने वाले गुरुजी हैं, पर अगर हम उनको थोड़ा गाइडेंस दे देंगे इस बारे में, इट्स इम्पोर्टेंट। सो आई जस्ट टोल्ड हर, भाई ऐसे कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी के साथ बैठ जाओ, उनको मन में रख के जल प्रसाद रख दो। दैट्स हाउ आई फील। लाइक गुरुजी के साथ ही तो रबों के रब है, रबों के रब है, इज अ क्रिएटर। बिकॉज आई रियलाइज, when I was small, I used to go to Himachal very often, and I always thought, ऐसे क्रिएशन कितनी सुंदर है, इमेजिन द क्रिएटर, I want to meet the creator. ये मेरे मन में रहता था, I never shared with anyone. And when I met Guruji, at some point I realized, I wouldn't say initially, but I realized I met the creator of the universes. Because of the experiences, now you say, what experiences? Yes, life is not bed of roses. We've gone through a lot as a family, but I feel Guruji is holding us. We are alive because of Guruji. As simple as that. We are all alive because of Guruji. हर पल वो कहते तुसी एक बार आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी चलावांगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। These are those one liners he said, his vachans, his
हमें याद है, पर हम बुद्धू थे, हमने लिखे नहीं कुछ। संगत पे बहुत ब्लेसिंग्स थी तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर राइटिंग, बट आई रिमेम्बर शेयरिंग इट, एंड देन दैट्स हाउ आई रिमेम्बर। आई डू शुक्राना कि सत्संग शेयरिंग का टाइम मिलता है तो उस टाइम वी गेट टू रीलिव दोस ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद गुरुजी। सो I'll share some more again the next time. तो संगत जी, the only thing very simple, it's a very potent, very simple, very beautiful दरबार। बस एक ही चीज कही थी, तुसी इत्थे आओ। तो आप जय गुरु जी, संगत जी, I don't know what to say कि आंटी जी अपने सत्संग शेयर करते करते, I don't know, her video got stuck and then she dropped off. But anyway, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे सत्संग हमारे साथ शेयर करे। So मल्टी ग्लोबल सेवादास टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्राना। अंकल दीवान का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यारे सत्संग शेयर करे हैं एंड वो इतनी पुरानी संगत है। तो गुरु महाराज जी उन दोनों को बहुत बहुत ब्लेस करें इमेंसली। तो संगत जी आइए, अब सेवादार आंटी से हम गुरु जी के साथ सामने आके लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।